أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. Before further delay, I would like to call Mr. Muhammad Farrukh Shahid on this stage. Well, he is a tech enthusiast and working on different hands-on projects of AI. Before wasting time, I would like to call Mr. Farrukh Shahid. Thank you, sir. Okay, Assalamu alaikum everyone, and a very good evening.
Warm welcome to my youth and बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत यंग जनरेशन यहाँ पे बैठी हुई है. So the topic जो हमने आज choose किया, I will be not speaking in English traditionally, but rather will be the Urdu mostly. The topic of today's talk is basically AI in our lives, right? I will be giving you some ongoing projects that we have been doing and what we have so far covered, right? And also, I will be presenting two use cases right now we do have here, and you will be mesmerized to see that how AI has actually impact in Pakistan and especially contributed to our nation. So let's begin. Am I audible to everyone? आवाज आ रही है? ठीक है. So, about myself, I did my PhD from Queen Mary University of London, UK, and University of Geneva. It was a joint PhD program. I returned to Pakistan in 2021. So normally लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान वापस क्यों आए when you been outside और लंदन से पढ़ने के बाद. So इसके दो ही आंसर हैं. एक पेरेंट्स, माँ बाप, दूसरा पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को सर्व करना है. So second question कुछ लोगों को डाइजेस्ट होता नहीं है कि ओके पाकिस्तान में क्या रखा है, पाकिस्तान को किस तरह सर्व कर सकते हैं. बट इफ़ यू हैव अ विजन और आपका अगर थॉट है तो आप बहुत कैपेसिटी में कर सकते हो. आई डू हैव अ लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ मी, ताहा एंड सैयद उमैद. दे विल बी गिविंग सम प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड यू विल सी दैट कि आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हो एक्चुअली. और ये कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, हमने ये 1 ईयर के अंदर ही ये सारी चीज़ें डेवलप की हैं. मेरा बैचलर्स और मास्टर्स दोनों मेहरान यूनिवर्सिटी से. आप में से कितने लोग मेहरान यूनिवर्सिटी को जानते हैं? मेहरान यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? काफ़ी लोगों ने सुना है. वन ऑफ द गुड स्टेट यूनिवर्सिटी. ओके. I taught in one of the prestigious university, Comsets, Lahore, for 3 years, and also in PFT. PFT का नाम सुना होगा, कराची में बहुत famous university है. Also Comsets, one of the very good federal university. And also I taught some of the courses in University of Genoa, Italy. Italy का नाम आप सबने सुना होगा, Genoa. आपने क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम सुना होगा, जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया था. तो वो बेसिकली जेनोवा में पैदा हुआ था और उसका अभी भी घर वहाँ पे मौजूद है जो उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है. सो आई विश एवरी वन ऑफ यू कुड गो ओवर देयर एंड सी हिज हाउस एंड सी द ब्यूटीफुल इटली. बहुत खूबसूरत कंट्री है इटली, बहुत ज़बरदस्त है एजुकेशन है के हवाले से और टूरिज़म के हवाले से बहुत बहुत फेमस. मेरा जो रिसर्च एरिया है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं और अब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक्सपैंड हो गया है पाकिस्तान में आने के बाद, बिकॉज जब आप बाहर से पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा विजन मिलता है. और विजन तो मिल जाता है लेकिन उस विजन को आप इनकॉर्पोरेट कैसे करते हो अपनी सोसाइटी में, बिकॉज वी टू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी. बट चैलेंज ये है कि उन प्रॉब्लम्स के साथ आप किस तरह आगे बढ़ सकते हो, किस तरह आप आगे मूव कर सकते हो, किस तरह आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है ना वो अचीव कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग. सो बेसिकली डीप लर्निंग का आपने नाम सुना होगा, ऑटोनोमस कार का नाम सुना होगा, यूएवीज का नाम सुना होगा. इसमें हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, इस पर हम लोग के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ अभी ऑन गोइंग है. दैट वी आर गोइंग टू गिव द प्रेजेंटेशन. These are the wonderful memories of Europe. I've been to many universities, I've been to many conferences, summer schools बाहर बहुत अच्छे होते हैं जिसमें इसी तरह की talks होती हैं, seminars होते हैं. And when you meet professor across the globe, then बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, right? These are my students. When I travel, so मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एयरपोर्ट पे किसी ना किसी कंट्री में मुझे अपने स्टूडेंट्स मिलता है, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2013. सो अब काफ़ी सारे माशाल्लाह स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया सेटल्ड हैं, कनाडा सेटल्ड हैं, यूरोप सेटल्ड हैं. तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने जिनको पढ़ाया है कोई ना कोई कोर्स, तो आपको मिलकर उनसे बहुत खुशी होती है. रिसेंटली आई बीन टू इस्लामाबाद एंड वन ऑफ द माई स्टूडेंट केम टू मीट मी एंड आई टॉट हिम बैक इन 2013. तो अभी वो बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर है एंड ही वाज सेइंग सर आपने जो पढ़ाया था वो अभी तक मुझे याद है. इट रियली गिव यू अ गुड एनर्जी के आपको कोई फीडबैक मिलता है आफ्टर द ईयर्स. सो आई थिंक सो ये जब भी पॉसिबल है जब आप खुद सिंसियर हो, लॉयल हो एंड यू हैव द विजन टू कंट्रीब्यूट. अदरवाइज इफ यू हैव द विजन टू कंट्रीब्यूट लाइक कि मैंने
अपना पैसा कमाना है, मैंने अपना ग्रीन कार्ड लेना है, तो आप उसी ट्रैक पे चलते हो और आप कोई कंट्रीब्यूट करते नहीं हो. सो आई सजेस्ट टू एवरीवन, every single student of mine, that you should have a very broader concept of contributing. और contributing किस concept में कर सकते हो? बहुत सारी चीज़ें. You can think 360 around, and you will get to know that how would you contribute. So yeah, apart from teaching and research, I do have a lot of good photographical skills. So you can see here. यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, I think so. Okay. Let me check. I think so. No, it's okay. Sorry for that. No, it's sensible. Yeah. Okay. So these all are taken by me. So maybe you can guess कौन सा country है, कौन सा city है. It's London, and also this is Italy, Venice, पानी वाला शहर. I wish every one of you could go there and see that. It's really mesmerizing city. पूरा पानी के ऊपर बना हुआ है और आप देख के हैरान रह जाते हैं कि किस तरह ये पानी के ऊपर सर्वाइव कर रहा है. So I wish everyone could go there and see this beautiful. So when I joined FAST, basically I am the assistant professor in FAST University in the computer science department, teaching the course of artificial intelligence, machine learning, computer vision, and also the deep learning. So when I joined FAST in 2021, जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मेरे पास ये टीम थी जो कुछ हम प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, क्योंकि एनर्जी बहुत थी. बाहर से जब आप पढ़ कर आते हो तो एनर्जी होती है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं. सो दिस वाज द टीम. 2022 में हमारे पास ये टीम थी. इसमें भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर हुए, नेशनल लेवल तक हम लोग पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह. And now this is the team 2023. So we have like almost 48 people who have been working with me, and we have been doing a lot. So उसमें से 2 केस एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने स्पेशली बुलाया है, सो दैट आपको आइडिया हो कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूजिंग AI को यूज करते हुए. AI का नाम तो सबने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ChatGPT हैज बीन डूइंग अ लॉट. कितने लोग ChatGPT यूज कर रहे हैं? एवरीवन, राइट. इसके अलावा AI का कौन सा कोई टूल यूज कर रहे हैं? एनीवन? Oh, that's good. Anyone else? किसी ने आज कोई चैट जीपीटी के अलावा कोई यूज किया एआई का टूल, या मशीन लर्निंग का, या डीप लर्निंग का? एग्जैक्टली. एनीवन एल्स? आई नो दैट यू नो. एनीवन एल्स हैव यूज्ड टुडे? क्या भी पॉसिबल? एनी केस एग्जांपल बता दीजिए अपनी लाइफ की. आज सुबह आप उठे होंगे मे बी 9 AM. आफ्टर दैट, yeah, this is one of the problem, and for this reason we are here to make you better understand. Maybe possible अगर चीज समझ में आ जाती है, और maybe अगर नहीं समझ आती तो it's okay, it's not a problem. So now these are the wonderful people. I really love these guys, and we have been doing a very good job, mashallah. And you can also cross check by asking my student कि काम अच्छा करवाते हैं या नहीं कराते, या प्रोजेक्ट अच्छा सुपरवाइज कराते नहीं कराते. And also the Shahid is over here, and I have seen one of my students over here as well. So basically सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बेसिकली ये है कि एक्चुअली विजन देना है और नेशन को विजन वाइज डायरेक्ट करना है. दिस इज व्हाट. नो मैटर आप कहाँ से, क्या बैकग्राउंड है, बट इफ यू हैव सम नॉलेज यू कैन एक्चुअली ड्राइव योर लाइफ अहेड. दिस इज वन ऑफ द चैलेंज. ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम कर रहे हैं और कर चुके हैं और कंट्रीब्यूट कर चुके हैं. एग्रीकल्चर का आपने नाम सुना होगा. एग्रीकल्चर पाकिस्तान, एक उर्दू में एक वर्ड हम सुनते थे, पढ़ते भी थे, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है. तो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क को आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए हम उसको एक्सपीडाइट कर रहे हैं और उस पूरे प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में. सो लेट्स सपोज यू कैन थिंक दैट कि एग्रीकल्चर में किस तरह हम AI को यूज़ कर सकते हैं. एनीवन? AI in agriculture. This is the first case example. Yes. CNN, convolutional neural network for discovery and advanced detection of disease Exactly. We can actually use the CNN. It's a bit technical. CNN, convolutional neural network. That can be used to identify that, okay, which
crop field you do have, right? So let's suppose आपका cotton का field है, आपके rice का field है, wheat का field है, so you can actually classify, right? Whenever you travel and see the farm fields, you can easily recognize, okay, ये गन्ने की फसल लगी हुई है, ये चावल की फसल लगी हुई है, ऐसे ही होता है, right? You can identify. But how the machine can actually identify that? You can use the help of the AI to actually do that, right? जो लोग बहुत नए हैं AI की फील्ड में, उनको it's a bit earlier for them to understand that, but जो technically sound है, they know that कि किस तरह काम किया रहा होता है. I must mention here is that जितना AI है, artificial intelligence है, और machine learning है, deep learning है, they have been working on the pillars of maths, जिससे हम सब भागते हैं स्कूल में, right? 1 and zeros, आपने पढ़ा होगा, बहुत पहले भी पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ा है कि कंप्यूटर 1 and zeros की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है. Whatever machine is going to learn and respond, let's suppose classification का टास्क है, prediction का टास्क है, वो 1 and zeros की फॉर्म में होता है, and it actually undergoes through some process, right? Which may be unfamiliar to you right now. I must mention here some of the recent achievements that we have so far. Recently, we've been to Prime Minister ceremony for Innovative Award. 2 of my projects got selected, and it was wonderful experience. One of the project is actually related to the medical, and second is related to the natural language processing. Natural language processing, NLP. नाम सुना है? NLP, right? So chatbots and all that. Whenever you speak, a machine understand what you speak, right? So this is NLP. बहुत broader definition है. So it was wonderful experience, and not only being to Prime Minister House, but also to learn that कि पाकिस्तान में हर सूबे के अंदर किस लेवल के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, स्टूडेंट लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे. And it was really wonderful journey. It was being organized by the HEC and the NUS together. So I always motivate my student कि national level तक अपने काम को लेके जाओ, अपनी जो भी skills हैं उसको लेके जाओ, so that the people start knowing you guys, right? This is the thing. Wonderful work, and this is, आप में से कितने लोगों ने इसको देखा है अभी, cow registration system. It has been popular in the media as well. The pointer of this work is Muhammad, is sitting over here. He will more brief you कि इसमें हमने क्या चीज़ deliver किया. And this is, by the way, has been launched, and you can actually use this our project to identify the animal, right? ये हमने काऊ की रजिस्ट्रेशन का एक सिस्टम डेवलप किया है, जैसे हमारा नादरा सिस्टम होता है, इसी तरह काऊ की रजिस्ट्रेशन है. And the math will tell you more that कि how has been the journey and what were the key identification, और AI computer vision किस तरह यूज किया. And you can also follow the news channels and also the articles and coverage of over this work. This is wonderful. Second achievement that we have, third achievement that we have made is Pasha. Pasha का नाम कितने लोगों ने सुना है? Pasha Software, one of the biggest software house in the Pakistan, and we won Pasha ICT award last year in 2022, and the project was Zenith.ai. Zenith is about fashion. Zenith is about your dressing, your clothes, right? तो उसके अंदर हमने AI को use करते हुए, computer vision को use करते हुए, we provided some kind of a solution. And this project also reached the national level, and also it reached at the international level, that is Aptica. Aptica हर साल होता है, 20 countries में होता है. Last year it was being held in Pakistan. तो उसमें ये प्रोजेक्ट हमारा जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा था, राइट? एंड द आइडिया वाज वेरी बेसिक, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन, एंड 12 मंथ्स के अंदर वो इतना मैच्योर हुआ, ओनली बिकॉज डेडिकेशन एंड द विजन क्लियर है, सो यू कैन रीच. एंड आपको पता होना चाहिए कि किस तरह कर रहे हो काम, किस तरह नहीं कर रहे हो, राइट? सो ये ऐसा कुछ नहीं था कि हम जो है वो मार्स पे चले गए थे, हम जुपिटर पे चले गए थे और वी डिड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट वी वर हियर इन दिस अर्थ इन कराची with no light, with no gas, but still we did all that, right? Also, Taha is over here, and his project is related to the poster detection and estimation. And this project actually we propose for the vulnerable people and people who are not able to go to the gym, and we provided some kind of the solution. Taha will also give some kind of the demonstration, and he has recently completed this project under my supervision.
And this project actually won the Best Innovative Idea Award in Karachi. I think it's a generation that, right? So yeah, so these are the things that we have been actually doing and contributing, and you can see the AI. ये कुछ posters हैं. I'm not sure that ये visible हैं या नहीं. I will also provide you the details of that. One of the project we did related to the fruit quality inspector, and this actually helps in the month of the Ramadan, in which we actually do not we are not able to classify okay the fruit is fresh or fruit is not fresh. So what we did is that we develop an AI-based solution, complete mobile app, and you just need to take out your mobile and go and scan the fruit quality. So it will let you know that okay which fruit has got some kind of the disease and which fruit is actually fresh and which fruit is not fresh, right? Again, this project is recently completed, and it actually gathered oranges, bananas, and potatoes, right? So we actually developed this model. Second is a bit जो दूसरा पोस्टर आपको नजर आ रहा है, it's a bit technical. It's a federated learning. Federated learning का नाम किसी ने सुना है? FL, federated learning. FL is a quite fascinating idea in which in this project what we did is that कराची में जितने हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स में डेटा को किस तरह शेयर करना है और डेटा शेयर क्यों करना है, बिकॉज वी वांट अ रिसर्च, और जब रिसर्च होती है तो इनोवेशन नज़र आती है. अगर आप देखें 10 साल पहले हॉस्पिटल्स में जो एडवांसमेंट थी वो डिफरेंट थी, अब हॉस्पिटल में एडवांसमेंट डिफरेंट है, राइट? तो हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें अब AI से रिलेटेड इम्प्लीमेंट हो रही हैं. इवन इफ यू गो टू द आगा खान, इफ यू गो टू द तबा हार्ट सेंटर, सो दे एक्चुअली डूइंग अ लॉट, राइट? सो फॉर दैट वी एक्चुअली डेवलप अ फेडेटिक लर्निंग framework. Of federated learning का idea ये है कि you don't exchange the data, you just exchange some kind of the model. और मॉडल एक्सचेंज करने में क्या होता है कि आपका डेटा इंटीग्रिटी रहता है. कभी भी कोई हॉस्पिटल पेशेंट का डेटा कभी भी शेयर नहीं करेगा, राइट? सो इफ यू डोंट शेयर द डेटा, देन हाउ वी गेट टू नो दैट ओके हाउ गुड इज द मॉडल ऑफ सम हॉस्पिटल, लेट्स सपोज ए और हॉस्पिटल बी, किसका सबसे ज़्यादा अच्छा है? आपने अक्सर देखा होगा मैंने डेली लाइफ में उस लैब का टेस्ट करवा लो वो ज़्यादा अच्छा है, उस लैब का टेस्ट न कराओ उसके रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं हैं. So how we actually come up with this problem? We actually develop a predictive learning process. So this actually allows you to the one superior model जिस भी hospital का should be transferred to other hospitals so that they get to know that ये वाला system 99.9 in accuracy दे रहा होता है, right? So this is the predictive learning process. Second जो हमने अभी जो प्रोजेक्ट किया है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि AI और कंप्यूटर विजन किस तरह यूज़ किया जा सकता है. और इसमें हमने डिफरेंट प्लांट की डिसीजेस को स्टडी करके और उसको हमने क्या किया, हमने उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की होगी, क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि वाई वी आर इंटरेस्टेड टू एक्चुअली प्रोटेक्ट सम काइंड ऑफ द डिजीजेस इन प्लांट or in cotton field or in maybe rice field or wheat field. Anyone? Why we are interested? So how many of you actually visited the farm fields? Maybe farm fields, agriculture fields, कपास की फसल या चावल की फसल देखी तो होगी, right? So you know that पाकिस्तान के अंदर आपके पास आपने नाम सुना होगा कीड़ा लग गया फसल के ऊपर, राइट? सो वो क्या होता है, नॉर्मली बहुत बड़ा लैंड होता है और फार्मर, आपने देखा होगा फार्मर को पूरा दिन लगता है ट्रैवल करने में, और फिर वो जाके देखता है अच्छा यहाँ पे कीड़ा लगा है, और फिर क्या होता है कि वहाँ पे स्प्रे किया जाता है और फिर फसल को बचाया जाता है, राइट? सो rather what we propose is that we should have the UAV drone, it can fly, जो कि आपने शादियों में देखे होंगे कवरेज के लिए. We just actually fly that drone and it actually captured the whole land in just 30 minutes. जो किसान जो कि पूरा दिन ले रहा है, let's suppose 5 hours ले रहा है, so what we did is that we just flew that UAV drone and it captured the whole field, and then we identify where is actually the problem, where is actually a disease, and then it started spraying. So this actually minimized that time जिसमें आपकी फसल को पूरा खराब होने का chances होता है. So we minimize that. This is one of the motivation of doing this one. And we actually worked with the wheat field, rice field, and also the cotton field. And the data set was locally collected in the Pakistan as well. So ये भी recently हमने काम किया है जो कि बहुत ज़बरदस्त है.
ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला आपने देखा होगा, पिक्चर देखा है, कितने लोगों ने देखा ये वाला, ये बेयर वाला? No one? So what do you actually perceive from this picture, from the उसकी जो स्मार्ट वॉच स्टिल बता रही है, ओके गुड जॉब. What you can actually perceive the problem statements, anyone? It's very interesting. So it actually tells you that आपके पास जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, लेट्स सपोज आपका जो स्मार्ट वॉच है, आपका मोबाइल है, आपका जो लैपटॉप है, दे आर ऑलरेडी स्मार्ट, बट दे आर नॉट सेल्फ अवेयर. सेल्फ अवेयर क्या होता है? यू आर सिटिंग इन दिस रूम एंड यू नो दैट व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन, राइट? हु इज स्पीकिंग, हु इज लिसनिंग, एंड व्हाट्स गोइंग ऑन. द फैन इज ओवर देयर, द रूफ इज ओवर देयर, राइट? सो द डिवाइसेस आर नॉट सेल्फ अवेयर, द डिवाइसेस, right? Keeping this problem statement in our mind, we did two projects on right side and the left side. Left side is related to heart rate and BP and the sugar level, which actually are being monitored by the smartwatches, right? And also the apparatus. आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे apparatus हैं जो कि ये calculate measure कर रहे होते हैं, right? But what is the probability all the measurements are correct, right? Let's suppose the devices are not properly measuring all that. So for that, self awareness is very important. Self awareness क्या होता है कि हमें जैसे पता है कि यार कुछ गलत हो रहा है, हम अगर किसी रोड पे जा रहे होते हैं, if we are not going in the right direction, तो हमें पता चलता है कि okay, we have been deviating from our normal path, right? So that kind of the information or intelligence we want similar in the electronic devices, the smart devices, mobile phones and the laptops, and this can easily be done, and that is called as the self-awareness. Maybe आप में से आगे जाके अगर कोई इस पे research करे, so self-awareness is really important for the smart devices to learn कि in which environment they have been operating and which environment is actually favorable for them, right? So two projects we have done, जिसमें से एक heart rate, BP और temperature का था, जिसमें we develop a self-aware complete system. And the devices should be able to learn, okay, the situation is normal. If the situation is not normal, जैसे इस वाली केस में normal नहीं थी, it is an abnormal situation, the device can learn that, okay, this is not what I have experienced before. ये वाला था, and the second one is actually MRI or CT scan से related था. This project actually went at the national level in the Prime Minister Innovative Award, in which we proposed that, okay, the CT scan machines and the MRI scan machines, also they are very advanced, but they are not self-aware. So we develop a complete self-aware model, right? So this is something which we have been doing a lot. यहाँ पे presentation बहुत long है, but I'm not going to detail everything, but we can see here, okay, IoT का कितने लोगों ने नाम सुना है? Internet of Things का everybody has probably listened that IoT. So IoT is the future. Everything is going to be connected with maybe the fans, tissue boxes. This mic is going to be connected with the internet, and this gives the full complete vision of IoT. Right? और IoT का फायदा क्या होगा? आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हो, किससे? अपने मोबाइल फोन से, राइट? ये तो पता है, राइट? अभी भी बहुत सारी चीजें हम अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर सकते हैं, बट इन द फ्यूचर even your tissue box can learn that maybe you have the flu today or not, right? The frequency that you have been using that tissue box, right? So you can think that हर चीज आपकी learn करेगी, and they have been learning our pattern. आपने देखा होगा, आप जब YouTube या Facebook पे कोई भी चीज क्लिक करते हो and it starts showing you that the preferences, ऐसे ही है, right? So these devices actually learning our patterns, our lifestyle. That's why they are intelligent. Lekin self-awareness is still far behind. So these are the things that is technically. एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, हमने जितनी जल्दी डिजिटल एडॉप्टेशन की है, 2022 का ये स्टैटिस्टिक्स था. So you can see here this total population, and also you can see here unique mobile phone users कितने सारे हैं, and you can also see here overall social media,
We have to use the social media, otherwise we will die very soon, right? So you can see कितने सारे statistics हैं, आपको शायद नजर नहीं आ रहे होंगे, maybe possibly due to the poor visibility, but you can see here. Also, the world most used social media platform, you can see your Facebook remains at the top, and then we have the YouTube, WhatsApp, Instagram, and all that. So इसकी वजह से हो क्या रहा है? Like we have been using lot of social media daily. We have been sending messages and all that. इसकी वजह से हो क्या रहा है? Anyone? You have been sending messages via WhatsApp, and you have been uploading Instagram stories and all that. You have been uploading stories to the Facebook. So what is the consequences? What are the consequences actually? Data generation. Yes. So can you believe this amount of data we actually generate daily? This amount of data, 2.5 quintile bytes a day. इतना data generate हो रहा है. Even if you text good morning to your friend, to your family, is actually contribute to the data. And this gives the data science, right? Data science. How to handle that amount of the data. And you must have heard about that. If you have the data, then you can develop a model. If you don't have the data, you cannot develop a model, right? आपके पास बहुत अच्छा कैमरा है, लेकिन आपके पास सीनरी नहीं है. So what you will do, right? How would you use that? So data is very important, and data को handle करने के लिए data science है. And artificial intelligence, machine learning, deep learning all comes under this big data science, right? Data science का तो नाम सुना होगा, I hope. Data science का नाम सुना होगा, and you must have also seen some couple of the examples as well. I'm just going to skip this. Data science is totally more technical, but we are here to learn that AI किस तरह हमारी लाइफ को फैसिलिटेट कर रहा है. Maybe I will provide these slides so you can go through and you can have. I would like to quickly show you something which is more interesting. AI in medical. AI, robotic arms, robotic surgeries. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या robotic surgery will replace the surgeons in future or not? कितने लोग कहते हैं कि कर लेंगे? Completely. Yes. No. Majority are in no. Or let's suppose maybe you want to go for your surgery, and the underlying hospital will give you two options. Surgeon maybe robot will do surgery, or surgeon robot will do surgery. किससे करवाएंगे? इंसान से करवाएंगे. Right, it's still okay. So it's still, because you know that if you have experience of the open heart surgery में जब patient operation theater table में होता है और उसमें बहुत सारी decisions लेने होते हैं, internal bleeding हो जाता है, patient का blood pressure high हो जाता है, sugar low हो जाता है, whatsoever. So one time पे doctor अपने experience के base पे क्या कर रहा होता है, decisions ले रहा होता है. So ये decisions, ये experience आप किसी robot के अंदर किस तरीके से incorporate करोगे? This is still a challenge. Because जो robot है वो कौन सी language समझता है? 1 and 0 समझेगा, और 1 and 0 क्या है? is a programming, right? So how would you do that? That is still a very challenge. So still जो हमारे society के अंदर जो surgeons हैं, non-robotic surgeons, they are still a blessing, क्योंकि वो सही operation कर देते हैं. Sometimes it goes wrong, but it's okay. AI in aviation. How many of you know that AI को हम किस तरह aviation airports पे लगा सकते हैं? I would suggest everyone, जो especially young generation यहाँ पे बैठी है, go and check YouTube video of the Singaporean airport. Singapore airport is the world first fully AI based airport. Check that documentary. That is being, I think so, covered by the documentary. बहुत ज़बरदस्त है. It's a one tap airport. One tap airport में क्या होता है, आपके पास सिर्फ आपने boarding pass tap करना है, just go directly, passing all the security checks, passing all the immigration. Nobody is going to stop you, and because it's totally sensor based, totally AI based, all the sensors are there. So वहाँ पे आप directly जहाज पे पहुँच जाते हैं. You might have experience traveling from Karachi airport as well. So आपने देखा होगा कि कितने check post होते हैं, right? Everybody stop you. I think so 7 to 8 stops हैं जिसमें आपको रोका जाता है. तो सिंगापुर एयरपोर्ट आप देखिए. इवन ऑल्सो यू कैन चेक दैट द दुबई एयरपोर्ट इज ऑल्सो AI based, इन विच उनका जो स्पेशली जो बैगेज हैंडलिंग सिस्टम है
that is totally AI based, in which they actually don't open the bag, but they get to know that किसके अंदर क्या transform हो रहा है. This is how the AI is actually transforming the things. Also, you can think a lot कि AI किस तरह हम AdWords पे लगा सकते हैं. Weather forecasting, aeroplane scheduling. Even if you go and check that जो British Airways है, British Airways का जो staff है, staff मतलब cabin crews, उनके जो jackets हैं, उनके जो outfit होता है, उसमें they have actually deployed the sensors. And why they have deployed the sensors? In case of the emergency, in case of any abnormal situation, they actually communicate with that sensors. इसके अलावा आप देखें जो A380 एयरबस है, विच इज़ अ मास्टरपीस ऑफ एरोप्लेन, डबल टेकर जहाज जिसे कहते हैं. पाकिस्तान में तो नहीं आता वो, लेकिन दुबई में आप देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव सच बिग रनवे. लेकिन डबल टेकर जहाज जो है A380 है, इट्स अ मास्टरपीस. उसके अंदर टोटली AI बेस्ड सेंसर्स, टोटली AI बेस्ड सिस्टम्स है जो कि उन्होंने डिप्लॉय किए हैं. इट्स रियली वंडरफुल. यू विल सी दैट इतनी हाइट पे 500 पैसेंजर्स को लेके किस तरह जो वो जहाज फ्लाई करते इतनी हाइट पे, यू कैन सी दैट लॉट ऑफ. सो इट्स नॉट लाइक टू वाइड्स, इट्स नॉट लाइक सिंपली लैक्टिक कनेक्शन, इट्स मच मोर बियॉन्ड दैट. और इसमें AI का बहुत ज़्यादा काम है, उसमें कंप्यूटर विजन का बहुत ज़्यादा काम है. आप किसी भी छोटे से सिस्टम को उठा के देखिए, आपको समझ आ जाएगा. इवन जहाज का जो रेडार सिस्टम है, आपको पता है जहाज रेडार से कम्युनिकेट कर रहा होता है. जहाज को तो खुद नजर नहीं आ रहा था ना, पायलट को रोड नहीं नजर आ रहा था, बट दे एक्चुअली कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ द रेडार्स. तो रेडार्स आर रियली पावरफुल, रेडार्स आर रियली intelligent these days, right? Agriculture is a feature. Now the government is also promoting and motivating the potential projects in this sector, and you can see here जो एक simply किसान जो है वो it will be the intelligent किसान, right? ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स आप देखेंगे, अगर गूगल पे सिर्फ आप ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स लिखेंगे तो आपने यहाँ पे ट्रैक्टर्स देखे होंगे, ट्रैक्टर्स जो फसल पे चलते हैं, फसल के लिए चलते हैं. लेकिन ऑटोनोमस ट्रैक्टर का आइडिया ये है कि इट्स टोटली सेंसर बेस्ड एंड दे एक्चुअली हैव द कैमराज, दे हैव एवरीथिंग इनसाइड दैट. सो वो जस्ट भी लैंड से गुजरते हैं, एक्चुअली दे स्टार्ट नोइंग दैट कि उस लैंड का क्या कंडीशन है, उसमें कितना जो है वो क्रॉप लगाया जा सकता है, क्रॉप कब तैयार होगी, क्रॉप में कितना प्रॉब्लम है. सो दिस इज अ फीचर. दिस इज AI in agriculture. Livestock and all that, this is a quality insurance in the using AI, fresh vegetables, and also this is much more needed in here as well, in Karachi especially. So you don't need to just ask the person, okay, is it fresh or not? You just need to take out your mobile and just scan that, okay, is it fresh or not? Right, so this solves a lot of discussion problems, right? Livestock monitoring, Umaid will be telling us more on it. It's a very good project. AI in fashion industry. AI, this is one of our project जो कि हमने deliver भी किया था. AI fashion industry. You can think that कि fashion में AI का क्या काम है? Anyone? Fashion या ड्रेसिंग या क्लॉथ सेंस में आपके पास AI का क्या काम है? डिजाइन एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली. ऑल्सो इट्स अ वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट. हम लोग जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं, सपोज इम्तियाज सुपर स्टोर या किसी भी ब्रांड में, वी नीड टू ट्राई समथिंग. वी नीड टू ट्राई समथिंग कि शर्ट हमारे पर कैसी लग रही है या अच्छी भी लगेगी या नहीं. So it's a very tedious process because we need to go into the restroom and all that. Instead, that we provide a AR-based solution or augmented reality-based solution. You just stand in front of the camera. You don't need to change your clothes. Just you see that, okay, ये shirt मेरे पर अच्छी लग रही है, नहीं लगी. This is what the AI in fashion industry, right? So again, very challenging. Again, very fascinating. आप में से जितने लोगों को fashion पसंद है, so they can actually go in this direction. AI in sports. स्पोर्ट्स में आप में से अगर कोई स्पोर्ट्स लवर है, सो एक्चुअली थिंक दैट हाउ AI कैन फैसिलिटेट. इट कैन एक्चुअली मॉनिटर players' health conditions and all that. So rather than having this wristwatch, you can deploy the sensors in the shoes, and shoes can learn that कि okay, इसका running कितना था, इसका health condition क्या है. This is a really wonderful concept. AI in sports also. क्रिकेट के अंदर अब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर विजन और AI इन हो रहा है, और आपने देखा होगा ट्रेडिशनली वी डू हैव द एम्पायर्स, आई थिंक सो, एम्पायर्स, और एम्पायर्स फैसला देते थे कि आउट हुआ नहीं हुआ. सो वी आर जस्ट रिप्लेसिंग विद द इंटेलिजेंट बेस्ड कंप्यूटर विजन सॉल्यूशंस. दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल प्रोजेक्ट. अब हम इसको स्टार्ट करें. पार्ट वी डिड इट लास्ट टाइम, AI इन फॉर नमाज.
AI नमाज में किस तरह काम आएगी? Anyone? Direction, time, and also we are more curious about the posture. रुकू किस तरह करना है, सजदा किस तरह करना है, right? So we should have this solution in which we will be told that okay, your ruku was good, your sujood was good, how many rakat you have performed or how many rakat you have missed that. So this is the complete solution that we are going to provide. So this is also called as a AI enabled prayer mat, jai namaz. उसमें सारे sensors हैं और even आप जब स्टैंड करते हो तो आपके पास जो प्रेशर है, स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है, प्रेशर सेंसर्स के ऊपर डिफरेंट होता है. व्हेन यू डू रुकू आपका जो प्रेशर है वो डिफरेंट होता है प्रेयर मैट के ऊपर जिसपे हम जाए नमाज पे जिसपे हम नमाज पढ़ते हैं. सो वी कैन एक्चुअली कलेक्ट ऑल दैट डेटा एंड अगर आपकी 4 रकात की नमाज है तो उसका डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स होगा, अगर 2 रकात की तो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स होगा. एंड विद द हेल्प ऑफ द एआई वी लर्न दैट एंड वी गेट टू नो दैट ओके आपने 2 रकातें या 1 रकात आपने मिस कर दी. नॉर्मली ये उन लोगों के लिए हम ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो वल्नरेबल हैं, जिनका मेमोरी लॉस्ट होता है, 60 प्लस हो जाते हैं, 70 प्लस हो जाते हैं, तो उनको मुश्किल होता है. लेकिन आजकल हम भी इतने ज़्यादा मेमोरी लॉस्ट में चल रहे हैं तो हमें भी नहीं याद होता कि 4 पढ़नी है या 2 पढ़नी है, राइट? सो दिस इज़ one of the wonderful project that we have started and we have been working on it. Soon you will see that inshallah. So these are the different autonomous car, बहुत है ना, and all that. So I would like to call Umaid, and after Umaid the Taha. Umaid will brief काव वाला जो हमारा काम है उसको किस तरह हम लेके चल रहे हैं और उसका ऐप उमैद आपको बताएंगे. तो आप ऐप भी इसको डाउनलोड करके आपकी अगर काव आ चुकी है तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, राइट? बट रिमेंबर दिस इज फॉर द काव, नॉट फॉर द बकरा राइट नाउ. सो नेक्स्ट टाइम वी विल हैव इट फॉर them. And after me, after Umaid, Taha will give you some brief description about the poster. By the way, you can approach me on this. Just don't give me the missed calls and all that. But अगर कोई projects से related है, research से related है, you are more than welcome to come and you are more than welcome to discuss because you are the nation, you are the youth of this nation and हमने आपको ही prepare करना है ताकि आप इस nation को आगे लेके चलो. Apart from every other underlying issues, we have to be on same boat, we have to be on the same note because जब आप travel करते हो internationally आपको पता चलता है कि हम पाकिस्तानी बहुत पीछे रह गए. बिकॉज जब वो कहते हैं कि ओके पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट उधर आ जाओ, साइड में आ जाओ, सो फिर पता चलता है यार हम एज अ नेशन बहुत पीछे रह गए. व्हेन यू ट्रैवल थ्रू कतर एयरलाइंस और मे बी अदर एयरलाइंस, सो दे गिव यू द फॉर्म, जस्ट फिल दिस बिकॉज यू आर पाकिस्तानी. सो हमें एज अ नेशन बहुत ग्रो करना है और जो यंग जनरेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है उनको यही है कि आई वुड सजेस्ट कि जस्ट कीप डूइंग हार्ट ब्रेकिंग, मोटिवेट रहिए. अंडरलाइंग इश्यूज आए, गैस पानी बिजली के इशूज़ होते रहेंगे, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसी में से ही आगे बढ़ना है. इसी में से ही हमें अपने अपने विजन को आगे लेके चलना है, अपनी फैमिली को आगे लेके चलना है. और आप में से जिनके पेरेंट्स हयात हैं, आपके साथ हैं, उनकी दुआओं के साथ आप आगे चलें. आप देखेंगे कि चीज़ें कितनी खुलेंगी आपके लिए, राइट? दिस इज़ फ्रॉम माई साइड एंड आई होप दैट यू लर्न समथिंग.